officers of any government or corporations, autonomous or semi-autonomous bodies controlled by any government, or from the subordinate judiciary in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court, a returning officer for each constituency. This is the provision which has been. अगर 51(1) को कोई कोर्ट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दे तो क्या कभी इलेक्शन हो सकता है? नहीं, then we have no other power. 50 को छोड़ देते हैं, 51(1) को अगर मुकम्मल अल्ट्रा वायरस कर दें तो ये इलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर डीरेलिंग करना कहना, आप ये कहें कि इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो ये तो इन्हें पिटीशन ग्रांट कर दी रहा है, क्या किया फिर इसमें? This is the main relief granted at the interim stage, which is also unconstitutional, unlawful. अच्छा, आपके पास कोई दरखास्त नहीं दी? No, my lord, no, my lord. There was nothing of this sort ever agitated anywhere in the whole. देखिए, हो सकता है कहीं गलत हो गया हो, किसी का भाई वगैरह को अपॉइंट कर दिया एज आरओ, चलें, हो सकता है। इंडिविजुअल का अगर किसी एक की करे वो कहेंगे जी आप ये बंदा गुनाह है, दूसरे को लगा दो, हम लगा देंगे। 1,500 बंदा ही बायस्ड है इनके अगेंस्ट, और इनके अगेंस्ट नहीं, जस्ट अगेंस्ट वन इंडिविजुअल। प्रॉब्ली ही माइट बी कंटेस्टिंग फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। आप उसके हद तक करें अगर आपको प्रॉब्लम है, कम टू अस, वी विल लुक इनटू। और वो ये भी नहीं बता रहे कि उस ऑफिसर में प्रॉब्लम क्या है। नो, दे आर सेइंग कि एज अ कांसेप्ट एग्जीक्यूटिव नहीं हो, एज अ कांसेप्ट, चूंकि हमारे अगेंस्ट एमपीओज के ऑर्डर्स किए हैं डिप्टी कमिश्नर्स ने, तो इसलिए जो हमारे अगेंस्ट पार्टीजन है। दिस इज द एलिगेशन। ये बताएं कि आरओ और उनके खिलाफ कोई किसी को कोई बायसनेस हो तो आपके पास उनका आने का कोई है लॉ? जी, कौन सा लॉ है? कौन सी सेक्शन है कि उनको आपके पास आना चाहिए कि ना कि डायरेक्टरेट में जाना चाहिए? अगर रेमेडी आपके पास थी तो वहाँ आए नहीं आए? आपके पास they have never approached us. तो है कोई प्रोविजन बताइए? It's 50. No, not 55. It's 55 का 3 है। इलेक्शन एक्ट का 55 का 3 जी। The commission 55(3). Section 55, subsection 3. The commission may, at any time, for reasons to be in writing, suspend or withdraw any election official, a public servant. कौन सा पढ़ रहे हैं? 55, section 55, subsection 3, my lord. Yes. The commission may, at any time, for reasons. तो आर्टिकल 199 जरा पढ़िए आइन का, ये तो वही मार खा जाएगा। जी। Alternate remedy. Last time the same learned judge passed the same order. कितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को? Sir, I think the total was few hundred billions. I don't remember the exact number, but few hundred billions actually. वो बिजली वाले 500 billion or something. हाँ? About 500 billion. Then again नेपरा को उन्होंने bypass करके order कर दिया। Subject to the Constitution, a High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. There's a rider, adequate remedy is there. और in fact ये assessment के कोई biased है या नहीं है वो भी किसी कोर्ट ने नहीं करना, ये खुद या तो वो इलेक्शन कमीशन ने करना है through their long arm of the people they work under election commission, because we have got people even at the lowest strata. लॉन्ग आर्म तो लॉ की होती है आपने of the election commission पे वो भी थोड़ी कम कर लें तो शॉर्ट आप कर लेते। वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। It's 204 my lord. नहीं, वो तो आर्टिकल है ना, Article 204 and section 3 of ये the तो जुडिशियल कंटेम्प्ट हुआ ना, and section 3 of the contempt of court. जरा पढ़ दें आप, जरा दे दें इनको किताब। हद हो गई। But you can get back onto the rails. अच्छा, आपने शेड्यूल क्यों नहीं अपॉइंट, अभी तक आपने शेड्यूल क्यों नहीं दिया है इलेक्शन? मतलब आज देना आज नहीं, आज आप देंगे ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के बाद हम नहीं, इलेक्शन शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। शेड्यूल इलेक्शन प्रोग्राम जो है we had planned it after the training, और training can still continue on the side. Where is the schedule? Show me the schedule. I don't have the schedule.
ट्रेनिंग तो आपने रोक दी, ट्रेनिंग कुछ और चीज है, शेड्यूल तो कह रहे हैं कि आप उसका शेड्यूल करेंगे, इसमें कोई बात तो नहीं है। शेड्यूल किधर है आपका? Schedule we can bring. We didn't bring it here. बताएं ना schedule we दिखाएं। wanted it We were going today. to issue the schedule Today. It must be ready somewhere, lying somewhere ना, तो दिखा दें। Who is the gentleman behind you? He's the Secretary Election Commission. जी, तो ये It had already been drafted. It's तो already- you'll issue it today. No, let them bring it. Your Lordship, the idea was to issue the schedule right after the training, which has, Why after What's the the connection between the two? that was what the commissioner decided, that they will issue it No, right but after the Mr. training. Umar Hamid, you would have, There must be some connection. and you must have drafted a program तो बन गया होगा ना, मतलब आप इंतजार तो नहीं कर रहे। इस दिन नॉमिनेशन पेपर देना है, इस दिन ये करना है, जी, वो section 57 के तहत, you know, you where count is that backwards. schedule? That schedule is counted 54 days backwards. Where is the schedule? We have it, sir. वो show it to valid us. है. We have the draft. We No, when will you issue it? It was supposed to be When will you Right issue after the it? training, sir. right after the training. When will you issue it? Originally, sir, it was supposed to be When will from you 13 issue? to 16, the training. Now, Wait, please, if you're going As your lordship if you if they are going to mock the law, if the election commission is going to mock the law, show us the law which says schedule will be issued after training is completed. But Refer to that provision. No, it says simultaneously. Show us that provision. Training can go on the side, that is just Training a can capacity go on building, till the उसका तो election मुताल्लिक day. नहीं है। It can continue training It people. says simultaneously with the. Where is the law which says Section 52, training ma'am. of officers? So, Mr. It's section Swati, you have not read this to the election commission earlier. No. This section 52 of It says the simultaneous हाँ, section तो फिर इनको 52. बताइए Where is it? It can go parallel. 52 exceptional circumstances में क्या? जी। Otherwise, आपके months लिए prior. आप जो कह रहे हैं शेड्यूल की लाजम है कि हम पहले ट्रेनिंग करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो बताइए, Lords, correct? क्यों कह रहे हैं? 60 days in ordinary circumstances Simple. before the election program. हाँ? Since delimitation was आज 8 फरवरी को अगर बैकवर्ड्स करें तो आज कितने दिन रह गए? today is the 55th day. 50? 5th day. 55 दिन आज. कल से 54th day. आपको मिनिमम कितना चाहिए? 54 days. तो you have to issue the You schedule have to issue the schedule today. today. Yes. Today. या तो फिर सबको बुला लीजिए, फिर आप भी वायलेट कर रहे हैं अपना लॉ. नहीं. So we were going to. Are you making a definite statement you're issuing it today or not? अभी We have your schedule ready, issue it. Hey, if you are so keen on elections, why are you backing off now? We're not backing. I mean, training, Mr. Umar Hamid also, training is just a capacity building which will continue. एक दिन लेट होगी, 3 दिन लेट, आप training करा दें, रात को extra करा दें. Sir, the idea was, if you allow me, sir, the idea was that we will complete the training between 13 and 16 and 16 पे करेंगे. Fair enough, but that hasn't Now what happened. has happened is that we've gone a little, like 4 or 5 days ahead. to 4 days. So that was the idea of the commission, if you allow, the commission लेकिन had, आप एक मेरी बात Sir. सुनिए, आपको आरओ और डीआरओ की जो एक्चुअल जरूरत है इस प्रोग्राम में, शेड्यूल में, तो अभी आगे जाके ना कहीं. नहीं आगे जाके नहीं. When is the first time they're required to work? क्योंकि नॉमिनेशन schedule. द लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन हमने शेड्यूल में देना है. कब है? अगर 57(2) का ए देखें ना. आप बताएं, डेट बताइए ना. How many days do we have from today to that first assignment that DRO has to perform? That's the 6th day from the issuance of the election program. ये 57(2) का ए लिखा हुआ है. Right. तो So you पहले you've दिन already भी done 2 5th days. डे फर्स्ट डे पे वेरी फर्स्ट डे पे भी नॉमिनेशन आके सबमिट हो सकते हैं. तो ठीक हो गया ना. अभी 1-2 दिन की भी ट्रेनिंग होगी, आपने 4-5 दिन की और ट्रेनिंग करानी है, करा लें. उसका तो कोई मतलब you can और ट्रेनिंग किसी ने रोकी नहीं है. देखें, That आप can be ट्रेनिंग pushed. ब्लाउज आपने रोकी है, ट्रेनिंग को जारी रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता था. ये तो खाली उसकी हद तक था. आपने पता नहीं क्यों रोक I've seen that. दिया. आप भी नहीं चाहते कि नहीं होना इलेक्शन. बेसिकली इसको आप तो देखो, अगर आपने करने के लिए सीरियसली हैं तो आप उसको कैरी ऑन करें. असल में नोटिफिकेशन माय लॉर्ड वाज सस्पेंडेड, तो इस वजह से वो एज अ नेचुरल अब अगली बात सुन लीजिए. नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ, आपने भी कोई नोटिफिकेशन जारी कर दी है? suspension of the notification of the appointments, which is ipso facto of what the. आपने क्यों किया है? Why? आपने क्यों किया? Why you issue the notification for suspension of? आपने क्यों किया? आपको कहा था कोर्ट ने कि आप ये करें. सर, जब आरओजी सस्पेंड हो गए तो फिर नोटिफिकेशन. आरओ सस्पेंड हुए हैं, फर्ज करिए अभी हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं, आपका तो नोटिफिकेशन रहेगा, वो इन पीरियड रहेगा ना. Immediately we will, sir. Why you immediately? Why you issue it?
Who had said so? That was done in compliance of the suspension order. भाई compliance कहाँ? भाई compliance किधर लिखा before this किधर लिखा हुआ है compliance करें? किधर कहा है कि आप issue करें? उन्होंने suspend कर दी, suspend हो गए, खत्म. तो why you issue? We had to. Why you issue? आपने क्यों issue किया? My lord, we. In compliance of Because I think that was you being unnecessarily. जब एक कोर्ट ने ऑर्डर ने सस्पेंड कर दिया तो आपको सिर्फ कहना है कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है जी. मतलब I think you just did an extra thing which is not required in law. There was a confusion because everybody was calling us up and asking us, so we had to, in compliance, deference to the court order. Due deference to the court order, हमने जो है ये भी नहीं लिखा हुआ. It has affected us. ये भी नहीं लिखा हुआ. It has affected us negatively. Confusion नहीं है, confusion इस रिमूव नहीं होती जैसा आपने रिमूव की. Confusion तो थी, ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है. We got the order. You know, there are notifications suspended by courts usually. Doesn't mean that FBR issues another notification saying now then all of my notifications suspended. ऐसा तो नहीं होता. I think this is just an extra care में totally unnecessary exercise जो आपने की. May I just respectfully submit, whenever there is an order by any court, yes, then whatever actions we have already allowed to go on, we hold those in abeyance. And when the court or the higher judiciary gives us another order, then we restore it accordingly. That was all. Whenever there is simple, for instance, if there are delimitation cases, because our own people are on the ground, they have to be given some orders by the commission also. That was the reason. Okay. अच्छा, आपने स्टे भी मांगा है. स्टे एप्लीकेशन नंबर इज 10612 केस यू वांट इट. We'll correct the order. I'm pretty exhausted by now. My apologies, my lord. No, it's good that you come. It's not your fault. This petition for leave to appeal assails the order of